So please read French East India Company. Please read. The huge profits enjoyed by the above companies attracted French also. In 1664, during the period of King Louis XIV, his minister John Baptiste Colbert founded the French East India Company. In 1668, under Francis Caron, the company established first factory at Surat and second factory was established at Masulipatam 1669. 1669. So सबसे पहले इन लोगों का है फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत और सेकंड फैक्ट्री एट मसूली पटना इन 1669. ब्रिटिशर्स कब एस्टैब्लिश करे थे? 1611 में. इन लोगों कब एस्टैब्लिश करे? 1669 में. ठीक है. Next point. In 1674, the Francois Martin of French East India Company purchased a modern site of Pondicherry from Raja of Valikondapuram and established a trading center there, which eventually became the chief French settlement in India. पौंडीचेरी, आज का पौंडीचेरी का नाम क्या है? पुडुचेरी. पुडुचेरी याद रखिए. पौंडीचेरी में फ्रेंच, गोवा में पोर्चुगीज. क्लियर है? या आपको मैथ फॉलोइंग में आता? पूरे इंडिया में कौन थे? नॉर्मल मेजर इंडिया वाज ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिशर्स. पौंडीचेरी में फ्रेंच लोग थे और गोवा में पोर्चुगीज थे. ठीक है. नेक्स्ट. The French acquired Chinsura 1688, Mahe 1720, Yanam 1731, Karaikal 1738. They also established a factory at Chandranagore in Bengal. They also established a factory at Chandranagore in Bengal. ठीक है. तो ये नाम याद रखना रहता है. इसके बाद पढ़िए. नेक्स्ट. In the beginning, their headquarters was at Surat, but later they shifted it to Pondicherry in February 1701. Francois Martin was appointed Director General of French Affairs in India. Director General of French Affairs in India. So पहली हेडक्वार्टर्स क्या थे इन लोगों का? सबसे पहला हेडक्वार्टर्स किधर बना है? सूरत में. सूरत. फिर सूरत से किधर शिफ्ट कर दिए? पौंडीचेरी में. पौंडीचेरी. कौन से साल में? 1701 में. Francois Martin. It is pronounced as Francois. Next. During 1742 to 54, Joseph Francois Dupleix was Joseph Francois Dupleix was DG, and he began to cherish the ambition of a French empire in India and started Anglo-French struggles which resulted in Carnatic Wars. So, which resulted in Carnatic Wars. ठीक है. Dupleix was the at French side and the Robert Clive was English side. Next point. In 1744, Robert Clive arrived in India. The British officer ruined the hopes of Dupleix to create a French colonial India. So, ruined the hopes of Dupleix to create a French colonial rule in India. जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी. बैटल ऑफ प्लासी में फ्रेंच इधर से काम कर रही थी और ब्रिटिशर्स इधर से काम कर रहे थे. So ultimately the French lost. ठीक है. And they packed up and went away. Next, last point. Finally, the French company was defeated at the Battle of Vandevash, Tamil Nadu in 1760, and later it could not recover from that blow from the English company. So last war जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, कौन सा वॉर था? बैटल ऑफ वैंडीवॉश इन 1760. लड़ते लड़ते लोग थक गए. उसके बाद इन लोग चले गए पूरे. डुप्ले को वापस बुला लिए थे और ये खत्म ही हो गई. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फिनिश. तो लास्ट बैटल का नाम क्या था?
Battle of Andy Wash. बैटल ऑफ ग्रैंडी वॉश। और लास्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज को कौन से बैटल में हरा है लास्ट वॉर में? पोर्चुगीज कौन से उसमें हरा है? Battle of Swali. बैटल ऑफ स्वाली। पोर्चुगीज को बैटल ऑफ स्वाली में हरा है 1612 में। इसके बाद में इन लोगों को फ्रेंच को कौन से बैटल में हरा है लास्ट बैटल? बैटल ऑफ Battle of Andy Wash. वो 1612 में, फ्रेंच को 1760 में। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में। 3 साल के बाद इन लोगों को पैक करके भिजा दिए। तो समझ में आया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई और कब खत्म हुई? क्लियर है? Yes. Yes. तो उसके बाद में वी हैव ऑलरेडी फिनिश अवर एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। डिटेल में अपन पढ़े लास्ट वीक। ठीक है। फिर टू 18th सेंचुरी ये सब अपन पढ़ लिए। आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। ठीक है। नेक्स्ट, सो लेट अस